हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस एक्सप्लोरेशन सीरीज। एक छोटा सा सवाल, सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने पहली बार सेल को देखा कैसे था? और जब सेल इतना टाइनी है, हम उसे अपनी आईज से नहीं देख सकते, तो उसकी स्टडी कैसे करते थे? इन सब सवालों का जवाब आज जानने के लिए हम पढ़ेंगे Who first saw cell and how did they do it? So we are going to start the lesson about who first saw cell and how did they do it. What tools do we use to study cell? इसमें हम सीखेंगे limit of resolution, what is magnification and estimating cell size. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। हर साइंटिफिक डिस्कवरी की शुरुआत एक सिंपल क्यूरियोसिटी से होती है और यही क्यूरियोसिटी हमें ले जाती है रॉबर्ट हुक के पास। सो रॉबर्ट हुक वाज अ साइंटिस्ट, not only a scientist but he was also actually an engineer. So he was a person who actually discovered cell. Let's see his story. He was an English scientist. His curiosity ended up in checking the cork. What is cork? Cork एक dead ट्री का बार्क होता है, ओके, एंड इसकी पतली स्लाइसेस करके रॉबर्ट हुक ने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर ऑब्जर्व किया। सो ही केप्ट बिलो अ माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व दिस कॉर्क। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हुई, हुक सेल्स ढूंढने नहीं निकले थे, उन्हें खुद नहीं पता था कि सेल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट नजर आए। एज यू कैन सी हियर इन द फिगर, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, एम्प्टी बॉक्सेस वर सीन। ये उन्हें रूम की तरह दिखे। उन दिनों मंक्स के रहने के रूम को सेल कहा जाता था। लैटिन में भी सेल को सेल्यूला कहते हैं। सो मे बी हमें सेल नाम वहीं से मिला है और इसी वजह से हुक ने भी उन स्ट्रक्चर्स का नाम सेल दे दिया। सोचिए, आज हम इन छोटे छोटे जब कंपार्टमेंट्स को देखते हैं, हम उन्हें सेल कहते हैं। सो दिस इज, यू कैन से, हाउ रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, एंड फर्दर ऑन मे बी ही कुड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल, but yes, his work was published in Micrographia in 1665. One reminder that these cells were not living cells. ये living cells नहीं थे, ये dead cells थे. Later on, after many years, there were certain discoveries, and of course, the living cell was also studied, which had different organelles. तो इन empty boxes में हम cell नहीं देखते, हम cell organelles नहीं देखते हैं. There are no cell organelles in these empty boxes because it was a dead cell. So this is how you can say the cell was discovered. Right. Now let's go to the next topic. How do you study cell? As we all know, cell बहुत ही हम देख नहीं सकते हमारी आईज से, ऐसा हमने चैप्टर में की शुरुआत में भी पढ़ा है। सो अगर हुक ने सेल देख लिए थे तो उन्होंने क्या अपनी आईज से देखे थे? इसका आंसर है नो। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नाम की एक थियोरी है, वो आज हम देख लेते हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। नाउ कैन यू सी टू डॉट्स ऑन द स्लाइड? राइट नाउ, जब ये दो डॉट्स दूर होते हैं, हम उन दोनों को क्लियरली देख सकते हैं, वी कैन सी देम वेरी क्लियरली, ओके, बट एज दे कम क्लोजर, what happens? The two dots start merging, they become one in our eyesight. Okay, so मैं अगर जो मैंने टू डॉट्स को एक पेपर पे बनाया और उनको मैं नजदीक ले आ रही हूँ, धीरे 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 मैं अपनी आई से नजदीक लेके आ रही हूँ, तो धीरे धीरे वो दो डॉट्स अलग होके एक लगने लगेगा। सो दिस इज व्हाट यू से इज अ लिमिटेशन. Okay, this is our human eye limitation. Our human eye cannot see things which are very close to us.
So a minimum distance of 25 centimeters have to be maintained so that we can see the object clearly. So वो एक ही डॉट हमें वो दो डॉट हमें एक ही जैसे लगने लगे, राइट? सो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन लिमिट ऑलमोस्ट 0.1 मिलीमीटर होती है. इसका मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज्यादा पास है 0.1 मिलीमीटर, ओके, इस डिस्टेंस से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. एंड व्हाट अबाउट सेल्स? सेल्स तो इससे भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. सो वी कैन से सेल्स आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई. वी कैन नॉट सी सेल थ्रू नेकेड आई बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रेजोल्यूशन. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया गया. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, ये एक डायग्राम है हमारी एनसीईआरटी की बुक में. जरा हम देखते हैं कि जैसे रॉकेट है, we are doing a size comparison over here actually. So when we see on the slide, ऊपर की तरफ हमें दो बड़े ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, रॉकेट, ह्यूमन ट्री, chicken, egg, right? This is moving down, 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 right? And what is happening here? We are slowly seeing animal cells, plant cells. We are seeing their parts, smallest bacteria, viruses, right? So basically, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज छोटी हो रही है. फिर आते हैं so what happens here is that we can say that the cells are so small, right? We cannot actually see them. We need a special tool. Okay, so because of the limit of resolution of our human eye, and because cells are so small, we are not able to see them. And what is the tool which we will be using for that? Okay, let's see the tool. Of course, the tool is the microscope. Okay, so as you can see, the microscope, even Robert Hooke invented his own microscope. As I told you all earlier, Robert Hooke was not only a scientist, but he was also an engineer, and he invented his own microscope, which gave him a you can say magnified image of the cork cells he was examining. So you can say microscope काम कैसे करता है? Microscope basically works with convex lens. Okay, so we have a convex lens. Convex lens क्या करते हैं? Convex lens, we know, magnifies the images, right? So any image, okay, is bigger. So here I am seeing a smaller image, but when it passes through the convex lens, it becomes bigger, right? So microscope basically works with convex lens which are used to magnify any image. इसमें दो important lenses होते हैं. एक होता है objective lens, दूसरा होता है eyepiece. तो दोनों मिलकर ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके दिखाते हैं. एक बात याद रखिए, माइक्रोस्कोप सेल को फिजिकली बड़ा नहीं करता, वो सिर्फ इमेज को बड़ा करता है. तो यानी कि ये फूल अगर जो छोटा है तो छोटा है, उसकी इमेज हमें बड़ी दिख रही है. ओके, द फ्लावर मे बी अ स्मॉल स्पेसिमेन. सो बिल्कुल वैसे ही जैसे फोन को हम जूम करते हैं, राइट, तो उस टाइम हमें इमेज बड़ी दिखती है, बट in reality it may be a small image, right? A small picture. So अगर माइक्रोस्कोप ना होता तो शायद हम सेल के बारे में कुछ जान नहीं पाते. Now there is one more question which needs to be answered. Okay, let's discuss that. That is estimating the size of a cell. कि सेल की साइज, सेल बहुत छोटा है, हम उसे देख नहीं पाते. ओके, ऑल दिस इज करेक्ट, बट व्हाट इज द साइज ऑफ द सेल, राइट? सो अब हम आते हैं इस सेक्शन में जहाँ एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी बुक में. तो साइंटिस्ट सेल को देख नहीं पाते थे. सो हाउ दे यूज्ड टू बेसिकली नो और द साइज ऑफ द सेल, हाउ डिड दे एस्टिमेट इट? ओके, सो यहाँ पे बायोलॉजी एंड मैथ्स दोनों का मिक्सचर होता है. ओके, सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे एक ट्रांसपेरेंट रूलर रखा जाता है. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट स्टेप हियर, रूलर इज केप्ट. ओके, द रूलर हैज अ मिलीमीटर मार्किंग. ओके, so the
visible field is marked, that इस particular visible field eyepiece और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो व्यू एरिया है उसे हम मेजर कर रहे हैं. So say for example it is 5 mm. Okay, so they found it to be 5 mm. Now I need to convert that into micrometer. Okay, so I'm converting that 1 millimeter is equal to 1000 micrometer. So 5 millimeter will be equal to 5000 micrometer. So we converted it. Now अब ruler हटा दे और वहां पे onion peel की एक specimen slide रख दें. So we have done this. We are putting a onion peel specimen slide and we are focusing our lens on it, and finally we are counting that 5000 micrometer के diameter में कितने cells हैं. I have to count them. Okay, I will start counting them visually. Okay, so I got, for example, I got 25 such cells. Okay, so in the book as you can see that I got 25 such cells, right? So I simply divide them and I get the size of one cell. So I'm putting it into a formula, diameter of the visible field in micrometer divided by the number of cell along the diameter, which finally gives me the, you can say, how many cells can be, what is the real size of the cell. So the real size of the cell is 200 micrometer. 200 micrometer. I'm dividing 5000 by 25. Okay, so I got 5000 and I'm dividing it by 25 here. Okay, so that gives me my 200 micrometer. Okay, now the next topic, understanding magnification. अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम बड़ा करते हैं उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. सो मान लीजिए माइक्रोस्कोप का आईपीस 10x है, ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मैग्निफिकेशन हो गया 100x. नाउ दिस मीन्स दैट द ऑनियन सेल्स अपीयर्स 100 times larger than its actual size. Okay, so using a microscope, simple calculations, we can estimate the real size of the cell. So by simply magnifying, we can do this. Okay. So how we can do this? We can use microscopes for doing it. Okay. Microscope is basically light microscope and electron microscope. ऐसे दो microscope होते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट यूज करके इमेजेस मैग्नीफाई करता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम पास होते हैं एंड मच हायर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पे दिखाते हैं. सो दैट इज हाउ वी स्टडी द सेल. I hope the lessons were clear today. What did we do? We discovered the cell by Robert Hooke. Human eye limitation, that is limit of resolution, how a microscope works, cell size estimation, and what is microscope. There are two types of microscope which we saw. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू लर्न सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. Keep learning, keep exploring. I'll see you in the next video. Bye bye till that time. Bye.